This is our 14th lecture. This is our 14th lecture. In this we will discuss Salam mode of finance, in which we discuss Salam mode of finance. Salam mode of finance is quite different from last 4 or 5 modes of finance. That is much easier to understand. Actually, these are a critical part of the course. I think the whole course of Islamic economics is critical. Just need to understand the concept. How does Salam mode of finance work? The key difference between Salam mode of finance and about all other mode of finance is that in others mode of finance, payments are sometimes payments are delivered when the product is delivered to the buyer. Sometimes payment is in the form of lump sum. Sometimes payments are in installments. Around in all kinds of finance, kinds of finance, like ijara, musharaka, mudarba. So this one is different. In Salam mode of finance, the seller is finance. The buyer finances the seller. But in the previous mode of finance, like ijara, then murabaha, and so in short, in last two modern modes of finance, mostly buyers are finance. Mostly buyers are finance, not seller is finance. As compared to ijara and murabaha, here the seller is financed by the customer, by the buyer. The reason is that the seller is needed finance for his instant need. For his instant need, seller को अपनी क्विक जरूरत पूरी करने के लिए क्या चाहिए होता है? फिनांस चाहिए होता है. अगर बायर सेलर को फिनेंस नहीं करेगा तो सेलर कभी भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. यही वजह है कि सलम मोड ऑफ फिनेंस में बायर सेलर को एडवांस पेमेंट कर देता है फाइनेंस करने के लिए. अगर फाइनेंस नहीं करेगा तो वो कभी भी वो प्रोडक्ट उसको नहीं बेच सकती. लाइक सम टाइम हमारे फार्मर्स कुछ पोर्स होते हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पेस्टिसाइड अदर आइटम्स अदर लाइक सीड्स पेस्टिसाइड बाई कर सकें. उनके लिए हार्वेस्टिंग फार्मिंग डिफिकल्ट होती है. लेकिन जब बायर उनको फाइनेंस करता है, एडवांस पेमेंट कर देता है गंदम की, राइस की, then they easily farm, then they easily
harvest the specific crops like wheat, rice, barley. So it depends upon finance. So here, Salam mode of finance, the sellers are financed to fulfill their instant needs. Now, you can do by self here. So this is the overview I have given. Salam means a contract in which advance payment is made for the goods to be delivered at a later date. Salam means a contract in which advance payment is made to the seller by the buyer for goods to be delivered at a later specific date. Here, advance payment is made to the seller and delivery date is fixed to the buyer. Two things are the key property of Salam. Here, the seller the seller shows the buyer to supply specific goods at a future date in exchange for price that is paid in advance at the time of contract. So therefore, it is quite necessary that the quality and quantity and the nature of the product should be fully specified without any ambiguity. It is also necessary in the seller mode of finance, the quality, quantity, and the nature of the product must be specified without any ambiguity. Otherwise, such kind of transactions, such kind of trade will create disputes. Okay. This is the second property of the salam. Third property of the salam is over here. Salam mode of finance. Salam mode of finance is Salam mode of finance is implementable
Sorry, I could not check your message, but no problem. I will do myself. Okay. Now again, I'm going to revise. I'm going to revise for all things, just for your best understanding. In Salam mode of finance, keep in your mind, please. The buyers pay. The buyers make full payment. The buyers make full payment in advance to the sellers to fulfill his instant need. तो सलम मोड ऑफ फाइनेंस में बायर सेलर को सारी पेमेंट एडवांस में दे देता है सेलर की इंस्टेंट नीड को फुलफिल करने के लिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर बायर सेलर को पूरी तौर पर फाइनेंस नहीं करेगा तो बायर कभी सेलर वो प्रोडक्ट बायर के लिए प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा या बाय नहीं कर पाएगा। लाइक बायर सेलर से वीट बाय करना चाहता है या राइस बाय करना चाहता है एंड द सेलर हैज नॉट sufficient resources to farm and harvest the wheat and flour, wheat, barley, rice. सेलर बायर को बोलता है कि अगर आपको राइस चाहिए देन आई नीड फाइनेंस, देन बायर क्विकली फाइनेंस द सेलर टू फुलफिल हिज इंस्टेंट नीड, उसकी पूरी जरूरत को पूरा करेगा। सेलर विल प्रोड्यूस द एडवांस पेमेंट करेगा बायर। Here the first condition is that is very necessary. Advance payment will be made. Advance payment will be made to the seller, and in the contract they will write the delivery date is fixed. Okay, and in the contract two things will be clear. First, advance payment. The second thing is delivery date will be fixed. The third thing, Salam contract will be applicable for those goods which can be accurately, precisely measured, weighted. अगर गुड्स को प्रिसाइजली मेजर या वेट नहीं कर सके या वर्कमैनशिप में उनको मेजर नहीं कर सकते तो सलम मोड ऑफ फाइनेंस होल्ड नहीं करेगा। अब गोल्ड में, सिल्वर में, स्टोन्स में सलम मोड ऑफ फाइनेंस होल्ड नहीं करेगा। जितने भी शॉप ज्वेलरी वाले गोल्ड बनाते हैं, सिल्वर बनाते हैं, सभी की क्वालिटी वेरी करती है। आप कहेंगे वो कैसे? भी कैरेट तो सेम हो सकते हैं, 21 कैरेट होगा या 18 कैरेट होगा, दैट इज द मैटर, इसमें कोई इशू नहीं होता। सम टाइम वर्कमैनशिप डिफरेंट होती है, जो उसमें वर्क हुआ होता है वो डिफरेंट होता है, एफर्ट डिफरेंट होती है। इसलिए कभी भी गोल्ड में, सिल्वर में और स्टोन में जिनकी क्वालिटी, क्वांटिटी और नेचर को आप मेजर नहीं कर सकते, वो सलम होल्ड नहीं करता। ये किसमें होल्ड करेगा सलम? एग्रीकल्चर सेक्टर में होल्ड करेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिनकी जिनमें आप हम बोल सकते हैं ओके, इन शॉर्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर में होल्ड करेगा। इसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सलम कॉन्ट्रैक्ट, in Salam contract, advance payment is made to the seller from the buyer and delivery date is fixed in future. Salam contract will be held for goods which are precisely explained in weight, in measurement, in workmanship, and the seller is responsible to supply the goods in future in the specific given time period. Then sellers receive the whole payment and produce or purchase the specifications and deliver the specific items within 2 days. Everything is clear.
Here already we have done. This one we have already done in the explanation. We have done. So Salam cannot be cannot be implementable in those goods whose quality, quantity, and nature and workmanship are not specified. Example is here. Salam, the one thing is, Salam cannot be good, cannot be used for a particular commodity or a product of a particular field or farm. For a particular field or for a particular farm. For example, if the buyer requires that I need 40 kg wheat from this specific farm, or I need 40 kg mangoes from this specific tree, then the Salam contract will not be valid, because there is a possibility that the product of that particular field or the fruit of the particular tree is destroyed before the delivery. पॉसिबल है बेटा वो डिलीवरी से पहले वो फार्म वेस्ट हो जाए, सारी पॉसिबिलिटी होल्ड करती है. So delivery is uncertain. When a delivery is uncertain, then the Salam contract is not valid. The rule is that the Salam is applicable to every commodity whose supply is not uncertain. Whose supply is not uncertain. अगर supply uncertain हो जाएगी, अगर supply uncertain होगी, then Salam contract hold नहीं करेगा. This is one feature of Salam contract. The next feature is that there should be no ambiguity in the measurement, in the weight, in the nature of Salam. Okay. It is necessary in the Salam contract that the quantity of the commodity, must be agreed in unequivocal terms. Unequivocal terms mean if the commodity is quantified by weight. If the commodity is quantified by the weight according to the use of trade, its weight must be determined. If the commodity is quantified through measurement, then exact measurement should be known. Means अगर कोई commodity या कोई product weighted है या measured है, then Salam contract में उसको क्लियर करना चाहिए कि मुझे इतना वेट चाहिए या मुझे इतनी मेजर में इतना मीटर चाहिए, इतना गज चाहिए. तो अगर कोई क्वांटिटी, कोई भी प्रोडक्ट वेट में मेजर करते हैं, वेट में क्वांटिफाई करते हैं, देन वेट में उसको क्वांटिफाई किया जाएगा. उसका वेट डिटरमिन होना चाहिए. अगर उसको मेजरमेंट में उसको क्वांटिफाई करते हैं, मेजरमेंट मीन लाइक उसको मीटर में मेजर करते हैं, गज में मेजर करते हैं, देन it must be quantified in measurement. That is the point. Like अगर आप क्लॉथ बाय करते हैं, क्लॉथ का फॉर एग्जांपल एक बायर है, वो सेलर से क्लॉथ बाय करना चाहता है,
उसके साथ सलम कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अब नॉर्मली जो क्लॉथ है वो उसकी मेजर उसकी वो क्वांटिफाई किसमें होता है, मेजर में वो क्वांटिफाई होता है। अब सलम कॉन्ट्रैक्ट में मेजरमेंट क्लियर होनी चाहिए कि 10 मीटर मुझे चाहिए, 100 मीटर बायर क्लियर करेगा सेलर को, मुझे 100 मीटर क्लॉथ चाहिए। इसी तरह अगर वे अगर क्वांटिफाई अगर प्रोडक्ट क्वांटिफाई होती है वेट, देन लाइक वेट, देन क्लियर होना चाहिए मुझे 50 मन गंदम चाहिए। तो सलम कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए, चाहे वेट में हो चाहे मेजर में हो। तो दिस इज पिक्चर ऑफ ओके। Salam contract is permissible on a product, on a commodity of a specific locality. अगर उस्मान कहता है कि मुझे कमालिया की गंदम चाहिए, अब ये पॉसिबल है कमालिया की गंदम उस लोकेलिटी की गंदम प्रोवाइड करना, इट इज एश्योरेबल, देन सलम इज गुड फॉर द स्पेसिफिक ट्री, लेकिन स्पेसिफिक फार्म और स्पेसिफिक ट्री के लिए परमिसिबल नहीं है। द नेक्स्ट वन इज सलम इज परमिसिबल to take a guarantor on solemn debt to guarantee that the seller satisfies his obligation by delivering the commodity purchased. Salam is permissible to take a guarantor on solemn debt. भाई पॉसिबल है कि सलम फ्रॉड कर जाए, इसमें जो सेलर है वो बायर से फ्रॉड कर जाए। बायर पॉसिबल है सेलर को बोल सकता है कि मुझे आप गारंटर दो, मैं आपको डेट दे रहा हूँ, एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ, मुझे गारंटर दो जो आपकी जो ये श्योर करवाए कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, you will have the obligation to deliver the specific item within due date, otherwise that person will be responsible, will be liable for the product. Okay. The final thing is that Salam sale is suitable for agriculture operation, especially agriculture operation and some industry operation. Salam is suitable for agriculture operation, जैसे मैंने आपको बताया, and some industry operation you can do by self the explanation. Now we are going to close our lecture. So if you have any question, you can ask please. This is the 14th lecture.